Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 28 December 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about acid attacks in India. Now, acid attacks is believed to be one of the most heinous crime which is targeted against women or the girls. An acid attacks involves the pre-planned throwing of acid on a victim, usually on her face. It is a gender-based heinous crime which is targeted against a woman. तो यहाँ पे acid attacks, you must have heard about acid attacks in the news. ये often news में रहता है, unfortunately, ठीक है? Because incidents of acid attacks do take place in India, and the number of incidents, even though there are so much of strict provisions in the law, but still the number of cases are rising day by day. तो यहाँ पे recently it has been in the news because a girl was attacked with an acid-like substance in Delhi by 3 assailants. The incident has brought back to focus the heinous crime of acid attacks and the easy availability of corrosive substances. अब यहाँ पे देखिए सबसे दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये नजर आ रहा है क्योंकि ये जो एसिड जो यहाँ पे फेंका गया जो थ्रो किया गया है ऑन दी गर्ल, नाउ इट वाज बेसिकली प्रोक्योर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट. ठीक है, फ्लिपकार्ट से इसे खरीदा गया था. तो इसी वजह से नाउ इट हैज बीन मोर ऑफ कह सकते हो कि मोर ऑफ अ कंसर्न फॉर द वुमेन इन अ सोसाइटी. ठीक है, तो इसी टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. विल टॉक अबाउट द एसिड अटैक, यहाँ पे किस तरीके से वुमेन को टारगेट किया जाता है और क्या यहाँ पे सिनेरियो है, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स, बट मेंस के लिए इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर यहाँ पे कोई भी इश्यूज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यू कैन ऑल्सो साइट एग्जांपल्स अबाउट द एसिड अटैक्स इन इंडिया के बारे में. It has been taken from the Indian Express. Now, if you talk about the scenario of acid attacks in India के बारे में, there's a body which is known as the National Crime Records Bureau, which manages and records all the crimes that take place in India. और यहाँ पे जो crime है, ये पे माना जाता है कि 150 cases recorded in 2019, 105 in 2020, and 102 in 2021. Even though the cases are declining year after year, but still we find the prevalence of this particular serious crime in the society in today's world as well. The West Bengal and UP are consistently recording the highest number of such cases, generally accounting for nearly 50% of all the cases in the country year on year. So as you can see in this picture, I've given you a graph representation of the cases that take place in India. तो आप देख सकते हैं कि UP and West Bengal are recording. तो ये जो data है, this is basically from the period from 14 to 18 में. तो ये जो period है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि UP and West Bengal have recorded the highest number of cases of acid attacks in India. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द चार्ज शीटिंग के बारे में, रेट ऑफ एसिड अटैक्स टू दैट 83% एंड कन्विक्शन रेट एट 54% इन 2019 का अगर हम यहाँ पे डेटा देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज शीट तो काफी फाइल हो गया था लेकिन कन्विक्शन रेट काफी कम है. ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट 50% इन 2019. अगर हम यहाँ पे 2020 का बात करेंगे देन यहाँ पे जो डेटा है इट इज क्वाइट इंप्रूव बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज शीट फाइल हुए हैं इट इज ऑल्सो इंप्रूव, इट इज ऑल्सो इनहेंस. 86% तक यहाँ पे चार्ज शीट फाइल हुए एंड 72% were convicted. But then again, if we look at the recent figures, जो last figure जो आए हैं from the NCRB data only, तो यहाँ पे बताया गया कि 89% तो यहाँ पे cases में charge sheet already filed हो चुका है, लेकिन conviction के case में only 20% of the offenses have been convicted. ठीक है, now which is not basically a very good idea, और आप कह सकते हो which is not a very good data for the society. In 15 के बारे में the Ministry of Home Affairs issued an advisory to all the states to ensure speedy justice in cases of acid attacks by expediting prosecution. और अगर हम यहाँ पे लॉस के बारे में बात करेंगे तो इफ यू स्टार्ट विद द आईपीसी दैट इज द इंडियन पिनल कोड, तो देखिए अंटिल 2013 तक एसिड अटैक्स वर नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट क्राइम्स. ठीक है, इनको बस जनरल क्राइम जैसा यहाँ पे माना जाता है. इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ नॉर्मल क्राइम ओनली. ठीक है, हाउएवर फॉलोइंग अमेंडमेंट्स कैरिड आउट इन द आईपीसी एंड एसिड अटैक्स वर पुट अंडर अ सेपरेट सेक्शन. ठीक है, अभी अगर आप देखोगे जो 326A है, द सेक्शन 326A ऑफ द इंडियन पिनल कोड दैट इज ऑफ द आईपीसी हैज मेड पनिशेबल द मिनिमम imprisonment of 10 years which is extendable to lifelong with a fine as well. ठीक है, तो यहाँ पे शायद अगर आपने वो मूवी देखा होगा चपाक, तो which basically is played by Deepika Padukone ने यहाँ पे she has portrayed the role of Lakshmi Agarwal who was attacked in 2005. तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से the women, the community, they act in order to have a separate provision for the acid attacks in India, in order to have some legal provisions for this. ठीक है, तो यहाँ पे 2013 के बाद से ही this 326 amendment आप यहाँ पे देख सकते हो of the IPC which basically contains imprisonment for 10 years and also for lifelong imprisonment along with a fine as well. और denial of treatment
ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस है। दैट इज अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल देयर इज आल्सो पनिशमेंट फॉर डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट टू विक्टिम्स, और पुलिस ऑफिसर्स अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है और द पुलिस इज नॉट रिकॉर्डिंग एनी पीस ऑफ एविडेंस, देन दे आल्सो विल बी, आप कह सकते हो कि दे विल आल्सो बी ट्रीटेड अंडर लॉ ओनली। तो डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट बाय बोथ पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल, मान लीजिए कि कोई अगर पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या मान लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इट कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे जो डॉक्टर होगा, जो कंसर्न अथॉरिटी होगा, दे विल बी इम्प्रिजन फॉर अप टू 1 ईयर एंड आल्सो डिरेक्शन। दैट इज अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर इज अगर इन केस इफ ही और शी इज शोइंग नेग्लिजेंस इन केस ऑफ ट्रीटिंग अ विक्टिम, देन उस केस में भी पुलिस ऑफिसर इज आल्सो पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years। तो अगर हम यहाँ पे रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे एसिड सेल्स का, देखिए देयर वाज अ लॉ व्हिच वाज बेसिकली अ ब्रिटिश लॉ, 1919 का एक लॉ है। तो इसी में यहाँ पे अमेंड करके डाला गया है 2013 में। ठीक है, सो 2013 इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर इन रिगार्ड टू द एसिड अटैक्स इन इंडिया, बिकॉज इसी ईयर में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ एसिड अटैक्स एंड पास एन ऑर्डर ऑन द रेगुलेशन ऑफ सेल्स ऑफ corrosive substances. So corrosive substances are those substances which will damage or destroy other substances with which it comes into contact by means of a chemical reaction. तो एसिड यहाँ पे एसिड का यहाँ पे बात हुआ है। So basically it has taken a cognizance of it. So based on the order only, the Ministry of Home Affairs issued an advisory to all the states on how to regulate acid sales and frame the model poison possession and sales rule 2013 under the Poison Act of 1919. तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री हैज रेगुलेटेड, मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड और गाइडेड द स्टेट्स, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट एक्चुअली कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की किस तरीके से द सेल ऑफ द एसिड कैन बी रेगुलेटेड। अब देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एसिड आर ऑलवेज यूज्ड फॉर अटैक ओनली। एसिड का बहुत सारा आप देखोगे फॉर रिसर्च, या आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई जो भी यहाँ पे स्टडी का पर्पस में भी यूज होता है। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो सेल है उस पर रेगुलेट किया जा सके, तो इसी के लिए एमएचए हैज बेसिकली इशूड गाइडलाइंस टू द वेरियस स्टेट्स। And maintenance of the data over the counter sale without a valid prescription of acid was not allowed until the seller maintains a logbook register recording the sale of acid. तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ डेटा के बारे में, तो देखिए ये सारा जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सब 2013 के बाद से ही हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली 2013 के बाद से ओवर द काउंटर, मतलब मान लीजिए कि जिस तरीके से हम यहाँ पे मेडिसिन को हम ले सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे ओवर द काउंटर आप यहाँ पे लाइक यू कैनॉट परचेज एसिड। ठीक है, ऑफ एसिड वाज नॉट अलाउड अनलेस द सेलर मेंटेन्स अ लॉगबुक रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग द सेल। बेसिकली यहाँ पे जो रजिस्टर होगा, द सेलर विल मेंटेन दिस रजिस्टर, और यहाँ पे सब कुछ लिखा रहेगा कि किसने लिया है और कितना लाइक हाउ मच क्वांटिटी ही और शी हैज टेकन एंड ऑब्वियसली फॉर व्हाट पर्पस एज वेल। ठीक है, तो ये सारा जो चीजें हैं, दिस विल बी मेंटेन बाय द सेलर ओनली। देन दिस लॉगबुक वाज आल्सो टू कंटेन द डिटेल्स ऑफ द पर्सन टू हुम द एसिड इज सोल्ड, द क्वांटिटी यहाँ पे कितना खरीदा गया है, द एड्रेस ऑफ द पर्सन, and also specify the reason for procuring acid. And age restriction and documentation के बारे में अगर हम बात करेंगे, the sale is also to be made only upon presentation of a photo ID. अगर मान लीजिए कि if you have only got some valid ID, only then you will be able to buy the kind of acid in India. ठीक है, the buyer also must have a proof he or she is above 18 years of age. And if we talk about the compensation and after care of the victims के बारे में, तो compensation देखिए, अगर कोई किसी को अगर मान लीजिए एसिड अटैक किया जाता है, तो इनको compensate दिया जाता है of at least ₹3 lakh by the concerned state government and the UT as the after care and rehabilitation cost. So this basically is the duty and the responsibility of the state government. और free of cost treatment यहाँ पे provide करना होगा. The states are also supposed to ensure that treatment provided to the acid attack victim in any hospital, public or private, is completely free of cost. ठीक है, the cost incurred यहाँ पे जितना भी cost होगा, like whatever cost will be borne in regards of a treatment, तो ये जो treatment है it is completely separate from this particular compensation. ठीक है, तो treatment के लिए अलग से खर्चा देना होगा, plus compensation भी यहाँ पे देना पड़ता है state government को. The reservation of beds, so acid attack victims need to undergo a series of plastic surgeries and hence 1 to 2 beds at private hospitals could be reserved for the treatment of acid attack victim. Now these are the basically compensation है if a person is been attacked by acid. Okay. And also there are a number of things that should be kept in mind by the government basically. So all the stakeholders need to get their act together. तो मान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी सारे लॉ मेकर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूटर, जुडिशियरी, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, एनजीओज एंड द रिहेबिलिटेशन, नाउ दे शुड बेसिकली वर्क हैंड इन हैंड इन ऑर्डर टू फाइट दिस मीनेस ऑफ एसिड अटैक. दे कैन ऑल्सो इन कर्बिंग सच वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. यहाँ पे दिस पार्टिकुलर जो भी स्टेक होल्डर्स है, नाउ दे शुड ऑलवेज वर्क हैंड इन हैंड. तो ये जो सारे आप कह सकते हो कि वायलेंस
violence है. Now these are quite detrimental to the modesty of women, and also they work against our efforts of the approach of India towards women empowerment. इसी टॉपिक के बेसिस पर एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है. Please answer in the comment section. The next article is going to be a little interesting because it is about the FIFA World Cup of 2022, which was held at Qatar. I hope everyone has witnessed the magical match that took place on the day of final of this current World Cup, which is between Argentina and France, and how the Argentina team led by Messi was able to emerge victorious in the FIFA World Cup of the present year. तो इस आर्टिकल में हम यहाँ पे बात करेंगे about certain important facts जो कि मेंस में तो आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या कोई जीके के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो रिसेंटली अर्जेंटीना won the FIFA. FIFA stands for Federation International de Football Association. This is important, याद कर लीजिएगा, which was held in Qatar by defeating France. तो अगर हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे, इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड टेकिंग प्लेस क्वाड्रिनली. तो इसका मीनिंग यही होता है कि इट टेक प्लेस आफ्टर एवरी 4 years. सो नेक्स्ट जो यहाँ पे फीफा होगा, इट विल टेक प्लेस इन द ईयर 2026. तो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इट टुक प्लेस इन उरुग्वे इन 1930. ये साल, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है. द विक्ट्री टीम वाज उरुग्वे इटसेल्फ. ट्रॉफी जो है, द ट्रॉफी कप अवार्ड फ्रॉम 1930 से लेकर 1970 तक वाज द जूल्स रिमेट ट्रॉफी. ठीक है, तो फॉर 40 years ये ट्रॉफी यहाँ पे लिया गया था, नेम फॉर द फ्रेंचमैन. तो जूल्स रिमेट ट्रॉफी जो है, इट वाज बेसिकली फॉर द फ्रेंचमैन हु प्रपोज द होल्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट. अ न्यू ट्रॉफी अब 1970 के बाद से द ट्रॉफी दैट इज इन प्रेवलेंस इज नोन एज द फीफा वर्ल्ड कप, व्हिच वाज पुट फॉर कंपटीशन इन 1970. और हम कुछ यहाँ पे हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे. तो इस साल का जो ये 2022 वाला जो यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो गोल्डन बूट जो है, दैट इज फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स. नाउ इट हैज बीन गिवन टू किलियन एम्बापे फ्रॉम फ्रांस, एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड has been given to Emiliano Martinez, who belongs to Argentina. He is basically the goalkeeper of Argentina. And golden ball, the performer of the tournament, has been given to the champion, that is Lionel Messi. And if we talk about the young player, it is given to Enzo Fernandez, who again belongs to Argentina. And the FIFA Fair Play Award has been given to Team England. और ये जो फीफा वर्ल्ड कप ऑफिशियल बॉल के बारे में बात करेंगे हम, तो ये देखिए, दिस वाज द बॉल व्हिच वाज यूज्ड बिफोर सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल एंड फाइनल में ये बॉल यूज किया गया था. तो सेमीफाइनल से पहले जो बॉल यूज किया गया था, उसका नाम है अल रहला. तो रहला आपने शायद सुना होगा इफ यू हैव स्टडीड मॉडर्न इंडियन, नॉट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बट मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जहां पे इफ यू हैव हर्ड अबाउट इब्न बतूता, इज बेसिकली अ मोरक्कन ट्रैवलर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. ऑलराइट, सो अल रहला जो है इस बॉल का नाम है. सो इट इज अ रेफरेंस टू अ ट्रैवलॉग रिटन by Ibn Battuta, the 14th century explorer, जो कि इंडिया में भी आए थे. And Al Rihla is the first World Cup ball to be made exclusively with water-based ink and glue. तो ये जो बॉल है, it was in prevalence before the semi-final. तो semi-final और final में भी यही बॉल यूज होने वाला था, but then again it was changed. So ये जो Al Rihla है, it was replaced by Al Hilm. ठीक है, so this you can see the Al Hilm which was used in 2022 semi-final and final as well. ठीक है, at the time of FIFA, जो first FIFA हुआ था in Uruguay 1930, there was no official ball, and both the finalists वो अपना बॉल लेके आए थे. That is Uruguay brought the T model ball, and Argentina brought the Tiento ball there, who basically brought their own balls. ठीक है, and Pakistan, you should know, it is the highest producer of the football in India. So you should know that Pakistan produces more than 2/3 of the world's football, with Sialkot जो है, it is the major hub for manufacturing of footballs. Now, if we speak about the mascot of the current year, now this you can see in the picture is Laib. So Laib is known as the mascot or the official mascot for the FIFA World Cup 2022, and Laib in Arabic it translates to super skilled player. So this in the picture, as you can see, it is the official mascot of the current year World Cup. और इसी टॉपिक के बेसिस पर यहाँ पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश, वेयर द APSLSA, that is the Arunachal Pradesh State Legal Authority, now they are observing the minority rights day. So through this article we will be taking up certain information about this particular day. इसे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? The minority rights day, which basically is observed on 18 December every year. So ये can be important for the prelims. The date can be important, and also from GS paper to the issues related minorities point of view से भी important हो सकता है. It has been taken from the Arunachal Times. So we'll learn about the minorities day. तो ये जो National Commission of Minorities है, the National Commission for Minorities, you should understand कि it is a statutory body. It is not a constitutional body. इसे फॉर्म किया गया था
था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992. तो दिस पर्टिकुलर जो बॉडी है इट केम इनटू प्ले 1993 में. इट हैज बीन इन फंक्शन. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर बॉडी सेलिब्रेट्स द वर्ल्ड माइनॉरिटीज डे ऑन 18th of December. ये डेट इंपॉर्टेंट है. द यूनाइटेड नेशन ऑन 18th of December, देखिए इसे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है. द कॉज इज बिकॉज द यूएन जो है ऑन 18th of December 1992 में it adopted a statement which is known as a statement on the individual rights belonging to religious or linguistic national or ethnic minorities. और इसी के बेसिस पर because the UN had adopted this particular statement, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक एक्ट पास किया था जिसे कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992. और इसका सोल पर्पस क्या है, तो बेसिकली to take up initiative to take up a number of safeguards for the protection of the interest of the minorities. ठीक है, तो इन सेक्शन 9 ये जो 2C है ऑफ द एक्ट, नो ये सेक्शन 2C ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इट डिफाइंस माइनॉरिटी. तो इट इज अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडिया के केस में दिस अप्लाइज टू मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन रिलीजन. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया के केस में देयर आर 6 माइनॉरिटी रिलीजन्स. और एज पर टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका जो कि एक केस है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया था कि अ माइनॉरिटी either linguistic or religion is determinable only by reference to the demography of the state and not by taking into consideration the population of the country as a whole. तो यहाँ पे you cannot just count the population, the number of people living around the nation. तो but यहाँ पे this concept is basically applicable as a demographic concept. ठीक है. Now if you talk about the constitutional provisions about the minority के बारे में, तो you should know that minority जो है, even though this term is found in a constitution, but this term is not defined in a constitution. ठीक है, so अभी हमने जो यहाँ पे definition देखा था about the 6 particular minorities के बारे में, now they were actually a part of the act. ठीक है, so the term minority is not defined in the constitution. However, the constitution recognize करता है यहाँ पे religious and linguistic minorities, which actually finds mention in the constitution, but they are not defined. Article 29 का हम यहाँ पे बात करेंगे. Provides that any section of the citizens residing, so Article 29 you must have heard about it. It is basically a right for the minorities, which is a fundamental right. ठीक है, so it is in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right. तो यहाँ पे अगर कोई भी मान लीजिए कि any citizen है who are residing in a part of India, now they have got a distinct language है उनका, और अगर उनका script और culture भी है, now they have got the right to conserve the same. However, Supreme Court ने यहाँ पे ये observe किया था. देखिए यहाँ पे mention है any section or citizen. तो यहाँ पे जो स्कोप है ना, the scope is not just limited to the minority, but this is also applicable to the majorities as well. ठीक है, the scope of this article is not necessarily restricted to the minorities, as the use of the word section of the citizen in the article includes minorities as well as majorities as well. Article 30 के बारे में, which is another fundamental right which is related to the minorities. So all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. For example, you must have heard about madrasas. तो ये जो प्रोटेक्शन है, द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 जो है, इट इज कन्फाइंड ओनली द माइनॉरिटीज व्हिच आर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस एज अंडर आर्टिकल 29. तो आर्टिकल 29 जो है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, बट आर्टिकल 30 जो इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी. एंड आर्टिकल 350B के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल 350 है, तो ये जो A, B ये जो सारे रहता है आफ्टर आर्टिकल, दिस इज बेसिकली अबाउट अमेंडमेंट के बारे में. ठीक है, अमेंडमेंट यहाँ पे जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ऑफ 1956, इट बेसिकली एडेड द आर्टिकल 350B इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और यहाँ पे इट प्रोवाइड्स फॉर अ स्पेशल ऑफिसर हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. And if you talk about the National Commission for Minorities के बारे में, as I told you, it was formed in 1993 and it was a statutory body because it was formed under the Act. ठीक है, so in 1992 with the enactment of the National Commission for Minorities Act of 1992, NCM was formed in 1993 में. In 1993 the first statutory National Commission was set up and 5 religious communities. So you should understand कि initially ना यहाँ पे जैन नहीं था जब ये फॉर्म हुआ था 1993 में. यहाँ पे there were only 5 religions were there. There is Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Zoroastrian. There is Parsi. But 2014 में Jains were also added to the list. देखिए 14 में इनको ऐड किया गया था, याद रखिएगा. एंड कंपोजिशन का अगर हम बात करेंगे, सो NCM जो है, there is a National Commission for Minorities. It consists of a chairperson and a vice chairperson, and there are 5 members. तो यहाँ पे कितने members हुए? There are 7 members, and all of them shall be from amongst the minority community only. So total of 7 persons to be notified by the central government should be from amongst the persons of eminence, ability, and integrity. So this is the background that they should be belong. And tenure का अगर हम बात करेंगे,
करेंगे तो each member का यहाँ पे जो tenure it is fixed, they will hold the office for a period of 3 years only. Now इसी टॉपिक के बेसिस पर एक क्विज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about the DISHA Scheme, which stands for Designing Innovative Solution for Holistic Access to Justice. तो ये जो scheme है, तो this was basically launched for a period of 5 years from 2021 and 2026, and this has been informed in the Parliament in the Lok Sabha by the Minister of Law and Justice. It can be important for our prelims, and also from mains it can be important from GS paper and social empowerment point of view. It has been taken from the Press Information Bureau. So in this scheme के बारे में हम बात कर लेते हैं. As I told you, it stands for Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice. तो ये basically related किसके लिए है? It basically is related to justice के लिए, ठीक है, न्याय के लिए. So it was launched in order to provide a comprehensive, holistic, integrated and systematic solution on access to justice at pan-India level. Because ऐसा माना जाता है, a number of people, because of the geographical constraint, because of the financial constraint, economic constraint, the people are sometimes they are denied justice, or they are not being able to you can say they are not being able to be subjected to justice or subjected to न्याय. तो ताकि इनको एक comprehensive, holistic, integrated and systematic solution दिया सके, तो this is the reason why the DISHA scheme has been brought about. It aims to secure justice to all the people of India as enunciated in the preamble. The preamble talks about justice. Article 39A, 14 and 21, even though they do not talk directly about justice 14 and 21, but they are also concerned with justice only. For example, if we talk about the preamble you should know it speaks of social, economic and political justice. If you look about Article 39A, it is basically a DPS, where there is a directive principle of state policy. In Article 39A of the Constitution of India, it deals with the provisions of equal justice and free legal aid. मैंने इसे कवर किया था एक आर्टिकल में about the free legal aid कि all the people regardless of their sex, regardless of whatever financial background they belonging to, they should be given proper justice. और इसी के लिए यहाँ पे free legal aid भी देना चाहिए. Furthermore, it provides free legal aid to the poor and the weaker section of the society and ensure justice for all on a basis of equal opportunity. If we talk about Article 14, now this everyone should know, it basically provides for equality before law or equal protection of the law within the territory of India. तो ये कैसे होगा? Through justice only. And also Article 21, it is about the protection of life and personal liberty. So life without justice, you understand, it is quite meaningless, right? अब ये जो दिशा स्कीम है, it aims to design and consolidate various initiatives to provide citizen-centric delivery of legal services. तो इस दिशा में आपको कुछ यहाँ पे 3 कंपोनेंट पाया जाता है मोस्टली. एक हो गया टेली लॉ, दूसरा हो गया न्याय बंधु और तीसरा हो गया लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम. इसी के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं. तो जो टेली लॉ है, टेली लॉ इज बेसिकली अबाउट रीचिंग द अनरीच्ड, ठीक है. तो स्टैंडर्ड आप देखिए, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज़ ऑफ जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट, तो पीपल आर आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस. तो इसीलिए टू स्ट्रेंथन द प्री लिटिगेशन लीगल एडवाइस एंड कंसल्टेशन, द टेली लॉ सर्विस कनेक्ट्स द सिटीजन. यहाँ पे सिटीजन को कनेक्ट किया जाएगा विद द पैनल लॉयर्स थ्रू द यूज ऑफ वीडियो. से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. नहीं तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल एट द CSC एंड ऑल्सो वाया द टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन. तो ये यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन लाया गया है सो दैट यू कैन सीक लीगल एड. एंड ऑल्सो अबाउट द न्याय बंधु प्रोग्राम. तो न्याय बंधु इट स्टैंड्स फॉर, इट बेसिकली मीन्स न्याय का बंधु मतलब न्याय का दोस्त, दैट इज प्रो बोनो लीगल सर्विसेज. प्रो बोनो it means without charge, ठीक है. तो न्याय बंधु is going to help with the legal matters without taking charges. So program it aims to provide free legal assistance without any charge, all right, and counsel to the marginalized section, that is to the poor section of the society. The न्याय बंधु जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पे लाया गया है for Android and for the Apple users, which has been developed to connect the registered pro bono advocate, मतलब जो यहाँ पे the advocates who have volunteered themselves to provide free legal services without any kind of charge with the registered applicants. And also about the legal awareness programs, and this is basically carried out at various levels. For example, at the village level, at the block level, at the district level, to bring knowledge, to bring about information among the public about the various legal services which are provided by the government time and again. तो यहाँ पे basically एक तरीके का awareness program लाया जाता है so that the people are aware कि उनके पास क्या क्या rights है. तो ये सारा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको लास्ट वीडियो में. लेट्स लुक एट द आंसर. तो द आंसर्स आर, तो बांग्लादेश इंडिपेंडेंस गेन करता है फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971 एंड ONDC जो है, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. नाउ दिस बेसिकली इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड अबाउट द हेडक्वार्टर ऑफ द NEC, इट इज लोकेटेड इन शिलांग. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining and we'll meet the next one. Bye bye and take care.